Okay, now let us start the session. Today we are going to start session 1, first session of chapter number 8, quadrilaterals. So you have already studied quadrilateral last year in class 8th. What is quadrilateral? Anyone? Sir, a four-sided polygon, sir. Okay, very good. A plane figure bounded by four line segments AB, BC, CD, and DA is called a quadrilateral. And a quadrilateral is a four-sided polygon. Polygon means, what is polygon? A closed figure formed by line segments. Very good. A closed figure. Polygon is a closed figure formed by using only line segments. So this is a closed figure using how many line segments? Four line segments. So this is called quadrilateral. Now इसमें AC और BD यहाँ पे डायगनल्स है. हम लोग इसके पार्ट्स को बाद में देखेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हाट यू हैव स्टडीड. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लास्ट ईयर पढ़े हो ना क्लास 8 में? Yes, sir. हाँ. सो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, देयर आर two types of quadrilaterals. One is convex quadrilateral and another is concave quadrilateral. And let us see what is convex quadrilateral. A quadrilateral is said to be convex if the line segment joining any 2 points in the interior of the quadrilateral lies completely in the interior of the quadrilateral. See, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट जो है वो कम्प्लीटली क्वाड्रिलैटरल के अंदर में ही रहेगा. सो इसमें दो पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट 2 points. द फर्स्ट वन इज convex quadrilateral have no portion of their diagonals in their exterior. जब हम लोग इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो उसका कोई भी पार्ट जो है बाहर नहीं जाएगा. The second one is that in convex quadrilateral each interior angles are less than 180 degree. See this figure, the diagonals का कोई भी जो पार्ट है वो quadrilateral के बाहर नहीं है. This is the first important point of convex quadrilateral and convex polygon also. And Sir, ah I didn't understand the first one. yes, I didn't understand the first one, sir. this one ये first वाला point. Yes, sir. ओके, क्वाड्रिलैटरल में कोई भी डायगोनल ड्रॉ करोगे तो क्वाड्रिलैटरल के अंदर में ही रहेगा उसका पूरा पार्ट. देखो ये डायगोनल बाहर गया है क्या? No, sir. वो क्वाड्रिलैटरल के अंदर में, एक्सटीरियर मतलब बाहर. ओके, Okay, sir. Right. Yes, sir. अब म्यूट कर लो. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंटीरियर एंगल. इसमें जो हर एक जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से कम है. हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स आर देयर हियर? 4. Angle A, angle B, angle C and angle D. All these angles are less than 180 degree. So these are the 2 points, very important point. Now let us see concave quadrilateral. Concave quadrilateral, a quadrilateral is said to be concave if the line segment joining any 2 points in the interior of the quadrilateral may not lie completely in the interior of the quadrilateral. तो थोड़ा जो पार्ट है वो बाहर जा सकता है. So see this diagram. This is a quadrilateral. 4 line segments है. So this is a quadrilateral. Now the first point of concave quadrilateral is that there exists at least one diagonal whose sum or full portion lies in the exterior of the quadrilateral. Exterior मतलब quadrilateral के बाहर आ जाएगा वो. And the second point, at least one interior angle measures more than 180 degree. So see carefully, यहाँ पे हम लोग दो डायगोनल्स बना सकते हैं. तो पहला डायगोनल बना रहे हैं, देखो यहाँ पर BD ज्वाइन कर रहे हैं. The second diagonal will join this one. See, this diagonal
completely lies outside the quadrilateral. Quadrilateral के बाहर है ना ये? हाँ सर. Yes, sir. Yes, So sir. that is why एक तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया कॉनकेव. दूसरा आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सेकंड पॉइंट है. यहाँ पे ये वाला एंगल देखो, this angle is reflex angle. It is greater than 180 degree. नोटिस कर रहे हो कि नहीं है? 180 से ज्यादा ही है. Yes, sir. Yes, So sir. this is the second identification of concave quadrilateral. So हम लोग जो भी quadrilateral अभी तक जो पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर जो पढ़ चुके हैं, all are convex quadrilaterals. Okay. So now we are going to study about different types of that is convex quadrilaterals. Before that, let us see terms related to quadrilaterals. So first, how many vertices are there? Four. So points A, B, The C, four. D are called the vertices of quadrilateral ABCD. Okay. Next, how many sides are there? Four. So Four AB, sides. AB, BC, CD, DA, all these line segments are called sides of quadrilateral ABCD. Next, how many diagonals are there? Sir, Two diagonals. Two So diagonals. AC and BD are called diagonals of quadrilateral ABCD. Next topic, adjacent sides. You tell me what is adjacent sides first. ये पूरा क्लास 8 का ही मैं रिवाइज कर रहा हूँ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट साइड्स? दो साइड्स को एडजेसेंट साइड्स कब बोलेंगे? If someone Sir, when they have a common vertex. वेरी गुड. सी यहाँ पे ध्यान से देखो. इफ वी आर टेकिंग दिस टू साइड्स ए बी और बी सी, विच पॉइंट इज कॉमन हियर? B. 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 So these two are called adjacent sides. So what is the definition? That two sides of a quadrilateral having a common endpoint are called its consecutive or adjacent sides. So don't confuse with consecutive. Already this word has been used in class 8th book also. So here how many pairs are possible? Adjacent sides के कितने pairs बना सकते हैं? Four pairs. एक बार B को कॉमन ले लिए, कॉमन पॉइंट B, A B B C, कॉमन पॉइंट C, B C और C D, कॉमन पॉइंट D, C D और A D, कॉमन पॉइंट A, A B और A D. So there are four pairs of adjacent sides of this quadrilateral ABCD. Next, opposite sides. What is the definition of opposite sides? Sir, the sides which don't share a common vertex. हाँ, जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है. वेरी गुड. सो टू साइड्स ऑफ quadrilateral having no common endpoints are called its opposite sides. So how many pairs are possible? Two pairs. Two pairs. AB और DC, इसमें कोई भी कॉमन endpoints नहीं है. Second, AD और BC. So there are two pairs of opposite sides of quadrilateral ABCD. Now next topic, consecutive angles or adjacent angles. Now what is the definition of adjacent angles? Angles, not sides, angles. Two angles are said to be adjacent. Angles which lie on same vertex. Not vertex, same side. उसमें एक जो आर्म एंगल्स का जो एक आर्म कॉमन रहेगा. जैसे ये वाला एंगल देखो, एंगल ए और एंगल बी, इसमें ये वाला साइड कॉमन है. एडजेसेंट साइड्स के लिए हम लोग कॉमन वर्टेक्स देख रहे थे, एडजेसेंट एंगल्स के लिए कॉमन साइड देखेंगे. ओके, सो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म और साइड आर कॉल्ड इट्स consecutive angles or adjacent angles. So how many pairs are there? Sir, four, sir.
Yes. 4, sir. First is angle A, angle B. Second, angle B, angle C. Third is angle C and angle D. And the fourth is angle D and angle A. Right. Now the next, opposite angles. Opposite angles का definition बताओ जल्दी से. Sir, the angles which don't share a common arm. Which do not have any common arm or common side. So इसमें angle A और angle C में कोई भी common arm नहीं है या side नहीं है. Similarly, angle B और angle D में. So these two angles are called opposite angles. So two angles of a quadrilateral having no common arm are called its opposite angles. So how many pairs are there? Sir, 2, sir. Very good. 2 pairs. Two pairs of opposite angles, angle A, angle C, angle B, angle D. Okay, so these are the terms related to quadrilateral. Is there any doubt in this section? No, sir. Now we are moving towards the next section, various types of quadrilaterals. Already ये वाला section class 8 में पढ़ चुके हो. This is the revision part only. So first type, parallelogram. What is parallelogram? Let me draw the diagram. Sir, a quadrilateral which has two sides parallel. Two parallel sides, sir. A quadrilateral which has two pairs of sides parallel. No, कोई भी ढंग से नहीं बता रहा है आंसर, अधूरा बता रहा है. Opposite sides are parallel to each other. So how many pairs of opposite sides? 2 pairs. 2. So PQ parallel to SR or PS parallel to QR, right? A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram, and it is written as, this is the symbol for parallelogram. I think all of you know this symbol. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, So sir. in parallelogram PQRS, this figure, we have PQ parallel to SR and PS parallel to QR. This is parallelogram. Next type is rectangle. What is rectangle? Let me draw the figure. Sir, and polygon in which opposite sides are equal. Polygon की बात मत करो अभी. Quadrilateral में हम लोग. Opposite Sir, each triangle measures 90 degrees and rectangle. Angle 90 degrees. Okay. अभी तुम लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो. Each angle measures 90 degree और whatever it be. So, but इसका जो correct definition जो है, it is a parallelogram actually. PQRS is a parallelogram. Rectangle is a parallelogram in which one angle measure is equals to 90 degree. अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएगा इसमें. सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन. अ पैरेललोग्राम वन ऑफ whose angles is 90 degree is called a rectangle, and we used to write as in short rect dot PQRS. Now in rectangle PQRS, the same property of parallelogram will be there. PQ is parallel to SR, P is parallel to QR, and angle P is equals to 90 degree. अब इसका प्रॉपर्टी फिर अभी नहीं जा रहे, बाद में करेंगे इसका प्रॉपर्टी. दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल, ऑल एंगल्स जो है वो सब सारे इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के. दैट ऑल प्रॉपर्टीज विल डिस्कस लेटर. ओनली अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में है. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, स्क्वायर. बताओ स्क्वायर क्या है? व्हाट इज स्क्वायर? चलो डायग्राम बना लेते पहले. ABCD. A quadrilateral in which all sides and all angles are equal. थोड़ा सा और रेक्टिफाई करो उसको. A parallelogram in Sir, a parallelogram in which all sides are equal and all angles are equal. All sides are equal, correct, and one of whose angle is equals to 90 degree. एक ही एंगल बोलो, वो पूरे एंगल्स बोलने की जरूरत नहीं है, वो सारे ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. सो पैरेललोग्राम whose all sides are equal and one of whose angles is 90 degree is called a square. So in this figure, actually see, if you see the definition of rectangle, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं है रेक्टेंगल में, बाकी पूरा सेम है.
So square is thus a rectangle having all sides equal. Now here किसी का अनम्यूट है, देखो म्यूट करो. Mute your mobile or devices. Now the next type is rhombus. What is rhombus? पहले डायग्राम बना लेते हैं. DEFG is a rhombus here. Okay. What is rhombus? A parallelogram whose opposite sides The are rhombus is the parallelogram and all sides are equal in rhombus and diagonals bisect each other That is a perpendicularly. property. Property बाद में देखेंगे. Definition is it is a parallelogram in which all sides are equal. Okay. Next, in rhombus DEFG, the figure what I have drawn, in this DE is parallel to GF and DG is parallel to EF. Opposite sides are parallel. That is a property of parallelogram. क्योंकि parallelogram है इसलिए parallelogram का property यहाँ पे applicable होगा. Now, in addition, all sides are equal. Right. Now, let us move towards the next type, trapezium. What is trapezium? So it's a quadrilateral in which one pair of angle sides are parallel. Okay, very good. It is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel, right? But इसमें थोड़ा सा मैं एक rectify कर रहा हूँ. At least one pair, क्योंकि इसमें कितने पेयर बना सकते हैं parallel? How many opposite sides parallel we can make? Two pair करने से parallelogram हो जाएगा. So इसलिए यहाँ पे ये actual में this is the textbook definition. A quadrilateral having at least one pair of opposite sides parallel is called a trapezium. Is that clear? Yes. That means Yes, sir. parallelogram is also a trapezium. Parallelogram is also a trapezium. Why? Because in parallelogram two pairs of opposite sides are parallel. जबकि trapezium में कम से कम एक pair opposite sides parallel होना चाहिए. Okay, so here in this trapezium ABCD, AB is parallel to DC. Next is isosceles trapezium. Isosceles trapezium में these two are non-parallel sides. If non-parallel sides are equal to each other, ये दोनों फिगर में equal actual में, so इसको क्या बोलेंगे? Isosceles trapezium. If the two non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is called an isosceles trapezium. So in isosceles trapezium PQRS, one pair of opposite sides parallel, that is PQ is parallel to SR, and PS is equals to QR. This is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now the last type is very special type is kite. So उसका ये figure है. So it's a quadrilateral with exactly two pairs of equal consecutive sides. Adjacent sides. You can say consecutive also, correct? Very good. So a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal, exactly two pairs of adjacent sides are equal, is known as a kite. So यहाँ पे exactly word मैं use नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे ये दोनों equal है और ये दोनों equal है, तो चारों भी equal हो सकता है. Okay? क्योंकि यहाँ पे केवल हम लोग दो पेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज AD is equals to CD and AB is equals to BC. So this quadrilateral is a kite in which AB is equals to BC and AD is equals to CD. Now, whatever the definition we have seen, from all the above definition, we are going to conclude some results. That the first one is rectangle, square, and rhombus are all parallelograms. This is the first point. Second point, a parallelogram is a trapezium, while a trapezium is not a parallelogram. The third point, a square is both a rectangle and a rhombus. Third point clear hai? Yes, sir. Every square is a rectangle. Every square is a rhombus. But the reverse is not possible. Every rectangle is not a square. Every rhombus is not a square. Now, a kite is not a parallelogram.
Last one. A rectangle or a rhombus is not necessarily a square. Any doubt in this section? No, sir. ठीक है, अभी मैं तुम लोग को एक बहुत sir. अच्छी दिखला रहा हूँ quadrilateral family tree. This is very good family tree, pictorial representation. So let us start with quadrilateral. There are 3 types of quadrilateral in this family tree. The first one is parallelogram, the second one is trapezium, and the third one is kite. Parallelogram का जो first family जो है वो rectangle है. The second one is rhombus. Now rhombus is a special type of kite. Kite का जो definition है, adjacent pair जो है वो एग्जैक्टली जो इक्वल होने चाहिए, 2 पेयर्स इक्वल होने चाहिए. यहाँ पे तो चारों पेयर्स इक्वल है रॉम्बस में. एंड काइट का जो प्रॉपर्टी है डायगोनल्स विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल, क्या प्रॉपर्टी है काइट में कि जो 2 डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट होता है 90 डिग्री में, और एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है. व्हाट अबाउट इन रोम्बस? बोथ आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट are in rhombus. That is why rhombus is a special kite. This is clear to all of you or not? Yes, sir. Sir. Okay. Now Yes, next, sir. rhombus or rectangle are connected with square. अभी देखो rhombus में all sides are equal है. अगर इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा. Rectangle में each angle is 90 degree. If all sides are equal, that will become square. Now trapezium में एक तो बच गया है isosceles trapezium. So अभी जो 7 टाइप के जो हम लोग जो पढ़े हैं, जो various types of quadrilateral, उसको मैं एक family tree से represent किया हूँ. Whether this is clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट. इसमें एक तो छूट रहा है, बताओ क्या छूट रहा है? एक कनेक्शन छूट रहा है. यू टेल मी. ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम का कनेक्शन वेरी छूट रहा है गुड, सर. वेरी गुड. हाँ, एक कनेक्शन यहाँ पे छूट गया हम लोग का, तो उसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं. क्या स्टेटमेंट था? व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट? Sir, a parallelogram in which at least one side is parallel is a trapezium, sir. One pair of opposite sides. अब हो गया, right. Now it is completed. All parallelograms are trapezium, but reverse is not true. Arrow mark. ठीक है, तो फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. अब हम लोग का फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया क्वाड्रिलेटरल का, नॉट हम लोग का. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. now we are moving towards next section, angles and property of quadrilateral. Already last year 8th class में पढ़े हो. The statement is that the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. So हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इसको. Let us take one quadrilateral ABCD. So what we will do, हम लोग को क्या प्रूफ करना है इसमें? The sum of all the angles, that is angle A plus angle B plus angle C plus angle D, is equals to 360 degree. So ये हम लोग को प्रूफ करना है. तो इसमें एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. What we will do, we will draw one diagonal. So we'll join BD. उसके बाद ये दोनों एंगल्स को 1 2 3 4 ले लेंगे हम लोग. कंस्ट्रक्शन इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now this quadrilateral is divided into 2 triangles. So we'll start the proof. We know that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. So in this triangle, the first triangle, what we can write, angle A plus angle 1
plus angle 2 is equals to 180 degree. Now in the second triangle we can write angle C plus angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree. So दो equation हो गया हम लोग. Now what we will do, we will add these two equations. ये दोनों equations को हम लोग add करेंगे. So add करने के बाद ये मिला, इसमें क्या करेंगे, एंगल A और C को एक साथ लिखेंगे, एंगल 1 और 3 को एक साथ लिखेंगे और एंगल 2 और 4 को एक साथ लिखेंगे. So एक साथ इसलिए लिखें क्योंकि ये दोनों को ऐड करने से क्या मिल रहा है, what you will get if you add these two angles, right? Angle B and angle And what you will get if you add these two angles, Angle D. right? So now I'm going to replace this and this by angle B and angle. Okay, so now we are going to replace angle 1 plus angle 3 will become angle B and angle 2 plus angle 4 will become angle D. So इसको थोड़ा सा rearrange कर लिए, so हम लोग का proof हो गया. So any doubt in this proof? No, sir. Okay. Now we'll see some questions based on this one. So let us start with first example. Three angles of a quadrilateral measure 110 degree, 82 degree and 68 degree. Find the measure of the fourth angle. So हम लोग fourth angle को x ले लेते हैं. Now what is the sum of all four angles of a quadrilateral? 360 degrees. Right. So we have 110 plus 82 plus 68 plus x is equals to 360. So what you will get if we add all this? 266. 260 plus x is equals to 360 degree. So x is equals to 100. Hence the measure of the fourth angle is 100 degree. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay. We'll see one more example. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. So what we will do, we will take first angle, let it be angle A 3x, angle B 5x, angle C 9x, angle D 13x. Right? Now what is the sum of all these angles? 180 degrees. Right, 360. Sorry sir, 360 degrees. Right. Since the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree, so we have 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equals to 360. So what is the sum of all this? इन चारों को ऐड करने से कितना मिल रहा है देखो? 30. 30x. 30x. Right. So 30x. what is the value of x? Sir, 300. 330. 330. अरे x को इसको डिवाइड करना है ना? Sir, 12. 12. Right. Sir, 12 sir. 12. Yes, sir. 330 बोल रहे हैं, माइनस कर रहे हो कुछ लोग. ओके. तो 360 डिवाइडेड बाय 30 करना है. सो विल गेट x इज इक्वल्स टू 12. ये क्लियर हुआ है कि नहीं? कैसे 12 आया? डिवाइड करना है. Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. ओके. सो एंगल A विल बी 3 into 12. कितना होगा? 36. Angle B 60. 60. Angle C 108 degrees. 108 degree. Last angle D, 156 degree. right, 156 degree. Up now one more example I will take up. The last example. The sides BA, see ABCD is a quadrilateral. Side BA is produced to E and DC produced to F, and this angle is A and this angle is B and this angle is X and this angle is Y, and we have to prove that X plus Y is equals to A plus B. So सबसे पहले what is the sum of these two angles? What is the sum of these two angles? 180 degree. Why? Linear pair. Very good. So what is the sum of these two angles? 180 degree. ठीक है. By linear pair. ये वाले Linear एंगल को मैं एंगल A डिनोट कर रहा हूँ और इसको एंगल C डिनोट करूँगा.
So we have angle A plus B is equals to 180 degree. So angle A will be 180 minus B. This is clear? Yes, sir. Okay. So let it be equation number 1. Similarly, angle C plus angle this A is equals to 180 degree. So angle C will be 180 minus A. Now what is the sum of interior angles of a quadrilateral? So 360. 360 degrees. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. Reason, sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. Next, now we are going to substitute angle A by 180 minus B, angle B, what is angle B? X, angle C by 180 minus A and angle D by Y. इसको substitute करेंगे. कर दिए? Now what is 180 minus 180? 0. 180 plus 180 plus है ना? 360. तो 360 से क्या ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और ये माइनस बी और माइनस ए को राइट साइड शिफ्ट करने से क्या होगा? प्लस हो जाएगा. Plus C plus तो A. लेफ्ट साइड क्या बचेगा? What will X be? plus Y. Right. plus y. और राइट साइड क्या बचेगा? A plus b plus c. राइट. सो यही प्रूफ करना था. x plus y is equals to a plus b. किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Okay, now we are moving towards the last section of today's session. Can you guess what is the last section? Right, assignment questions. So only few questions are there today. Only 3 questions are there, and this is based on this what we have seen in these examples. So all of you have to complete and send me to through WhatsApp. और WhatsApp में ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे, कोई भी टीचर का ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे, इंडिविजुअली सेंड करो. So that's all for today's class. Thank you very much. आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है? Okay, so I will upload this recording. You please watch once again for better understanding. After 1 or 1.5 hours, I will upload. Okay, are you watching the recorded videos once again? Okay, Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir.